resolving called handling exceptions by using some words. keywords. Again, we will see 5 more keywords from Java. Provided in Java language. Fine. So what are the keywords? Are you guys already aware about it? Let me write. Try, The very catch, right, throws, and finally. correct. So try, catch, throws, Throw. throw, or Fine. let me do finally here. Yes. So in same sequence we will actually write example for each of these keywords. So try, catch, then finally throws and throw. Okay, that's done. Now what's next? So okay, now let's see some. Okay, let me write one code, a simple code, then do some stuffs. Let's create a new package for exception handling or exception topic. So package okay, com dot pack dot exception handling. Okay, done. We have a package exception handling done. Right click, new class, and say first example. Fine. And inside this example, I'll create main method. Get stuck. Now I'll print some message. First statement. And likewise, we'll do second statement, third statement, fourth, and fifth. Okay, so we have 5 statements in this main method. If I run this code, Bipin, what do you say? What will the output if I execute this code? सर एरर Error. एक्सेप्शन नहीं सर ये एक्सेप्शन आएगा नथिंग प्रिंट क्योंकि यहाँ पे हम एक मिनट सर सॉरी सर यही आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट फोर्थ फिफ्थ स्टेटमेंट ओके, मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो ना, कहीं और तो नहीं देख रहे? नहीं सर मैंने वो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड मुझे लगा कि आप नहीं लिखे हैं इसे छोड़ दिया है अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ ठीक है, सिंपल क्लास लिखिए, 5 स्टेटमेंट है, कुछ यस स्पेशल नहीं सर है, प्रिंट करेगा डायरेक्ट। रन एज एप्लीकेशन। ओके, आ गया, कुछ नया नहीं है, वी हैव डन दिस फ्रॉम लास्ट 1 week, so it's quite straightforward. If you print something, it will come out if there's nothing much about it. Okay, चलो ठीक है, it's good, working fine. Now in between, let's say after second or third, whenever, whatever line, I'll put int c equals 5 divided by 0. Manan, what do you think? Now what will be the output? सर एक्सेप्शन है सर, एरर आएगा सर। Okay, तो मेरे कंसोल पे क्या क्या प्रिंट होगा? सर एरर ही आएगा सर डायरेक्ट। कुछ प्रिंट नहीं होगा? मतलब नो इनमें सर से कुछ लाइन प्रिंट्स होंगी कि नहीं होंगी? फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर प्रिंट बाकी सब नहीं होंगे ठीक है, okay Vipin. Manan, what do you say? He said that first 2 statements gets printed and then rest will be gone somewhere. यस सर। चलो सर let's रन see. रन टाइम पे सर पहले दो दो स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, उसके बाद एरर शो Hmm, होगा। right. Because Java works top to bottom. तो top में पहले 6 लाइन है, then 7th and then 8th लाइन है, तो 6 7 तो प्रॉपर है, उनमें क्या दिक्कत है, वो प्रिंट हो जाएगा। 8th यस लाइन सर। में इशू है, वो एरर देगा। तो लेट्स सी, रन एज एप्लीकेशन, है ना? So what just happened? What just happened here? We got the error. Error was arithmetic exception error. So this is what something we call this unwanted conditions, which actually affect this whole code flow or the program flow. Initially,
it was printing 1, 2, 3, 4, 5 without any issue. But as soon as we have some condition which has some logic or some operation, and if something goes wrong and we have exception, the rest of the lines will never execute themselves because control transfers. It just stops the execution and go outside of this block or this method. That's what happened here. Okay, that's fine. You guys know, so that's good. It will save my time, our time actually, not just mine. Okay, so fine. Now let's try to understand these keywords, how we can use them and how it affects. So first of all, let's pick the try block. So first keyword is try block. So how it looks like? Simple enough. We have to write try keyword and curly brace open. That's how a try block looks like. And here I'll say code goes here. Fine. Now, but we have a condition. It says if you're using try block, it can be used. It should be not. It should be used with catch or Or finally. finally block. Fine. That's the condition. If you want to use try block, that's fine, go for it. But we have a condition. Either write catch with try block or either write finally block with try. So I'll say the very first condition says with catch block. Okay, so it will like try block starts, code goes here, and the right after where the curly brace closes of try block, you have to write catch parameters, some Exceptions. exception name, If reference, then and then curly brace starts, and print exceptions. so that's how try works with catch block. Next is with Finally. finally block. That's a syntax actually, guys. That's what I'm writing here. It's a syntax. So you have to memorize it. There's another way. If you're doing it first time, so yep, you need to remember it. There's no alternative. So try, catch, try, and here goes finally. Fine. Any issue with this approach or this whatever I just explained here? No. Syntax wise we are good. Okay. So what kind of code we can write here? That's the question, right? So it's totally up to our requirement. Ideally, we always put all the suspicious code within the try block. I'll write it here. Note, we always put suspicious code which can raise any exception in try block. Yeah. Fine. So any code which you think it might throw some exception or it might raise some exception, so wrap that code within try block and it's done. That's the work of try block. So I hope working of try is clear. So any code you can even wrap the whole code within try block. That will work, not an issue. So that's the usage of try block. So what I will do, let's fix this. I'll say second example. I'll say try capital T. Try example. Try block example is better. Okay. So we have the same code, sys out, then we have this code. Now I'm very much aware about this line 9 that this is throwing the exception because earlier this was all 5 statements were printed. So what I will do, I will write try curly brace
and wrap this code within try block and leave it like this way. Okay, but compiler will says what it says. Let's see. Syntax error. Insert finally to complete the try statement. Yep. If you leave your try block like this way, you will get error. In case if you want you do this, so we will get a error from compiler. Okay, yellows are connected, done. So we just proved that yeah, it's true. We need to use either finally or catch block. But compiler usually forces to use finally block because that's how it is written. So we will fix it. All right, catch block for now and done. File save, error gone. For now, I'll leave this catch block. Uh, okay, let's not do. I'll just leave that catch block empty because we don't know yet what's the usability of catch. But if I run this code, what will the output now? Pippin? Now we just Sir, wrap that code. Yeah. all statement are print first. First statement, second statement, third, fourth, fifth. Okay. Fine. 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 I haven't discussed about this exception yet, so we will see that. Don't worry about it. But for now, we are focusing on try block. If we put something within try block, so what's the impact of it? Run as exception, and yep, even though our code has exception that has been kind of handled. It's not a proper way, but yeah, it has been handled, and all of our statements which were executed earlier, now we are getting. Excuse me, we are getting it. So, oh, not cut. So that's what we call exceptional handling. Exception handling, right? Not exception, exception handling. So we wrapped our code within try block. This is the one, and then we try to execute. We are getting our output. Great. Okay, so it's working fine. So what we just did, we have handled the exception. Exception has been handled by using try block. Okay, done. So that's the uses of try block. I don't think there's a doubt, but still there, you guys can say now. Okay, so that's the uses of try block. Next block is catch. Yeah, that's the only thing. Topic is not that big, and we will see every single example with the keyword. So next is catch block. Catch block. Okay, so catch block. What's the purpose of catch block, Manan? Any idea? Usage of catch block? So it will catch an exception throw by an try block, and then we will process in in it. Hmm. Okay. I mean, you don't need to explain the within and that. Let that you can leave it. It whatever you said initially, that's more accurate. So yeah, the purpose of catch block is to handle exception which has been thrown by catch block. Oh, sorry, try block. That's it. Used for handling exception which is thrown by Yes, try A, block. try That's block. the purpose of it. Handling exception. Fine. Yep, that's how it works. So whatever exception has been thrown, we can easily handle it inside this.
catch block. So we already know how it looks like. So I can take the previous syntax, this code. So again, you cannot just write catch block. You need try block. So try block needs catch or try block. Sorry, my bad. Catch block needs try block. I'll put note here as well. Catch block should be used with try block. Fine, done. And that's the example. That's how it should go. Okay, done. Now we know what's the purpose of catch block. It is used to handle the exception. For now, handle, I'll instead of saying handling, because handling is something which is uh, more or less, actually it's not even 100% correct. Does it actually handle the exception or it handles the flow? So I'll say um, mostly, I'm explaining what's the actual purpose. Mostly used for logs and re of the flow. Okay, that's the actual use of in projects. Mostly used for logs or redirection of the program flow. Okay, I hope you guys are getting the second line. That's the actual purpose सर of. ये लॉग Yes, और रीडायरेक्शन क्या है? logs नहीं पता क्या होते हैं? नो सर. अच्छा, logs so logs क्या होता है कि it's like if you have done something, how you will track all the records. तो कहीं आप अपना कुछ एक डॉक्यूमेंट या कुछ एक मेंटेन कर रहे होंगे. Think about your whole journey, whatever you have done from first class to 10th, 12th, then you have done graduation. Now you're going to join some company. So they will ask you your documents. So you must have, you know, logged them somewhere, maybe in your file folder or somewhere in your safe or whatever the location is. So what are you doing? We're just logging all the stuffs. ओके Maybe सर. someone wants to log their expenses कि मैंने आज पूरे लास्ट 1 वीक या 1 मंथ में मेरा कितना एक्सपेंस कितना खर्चा हुआ मैंने कहाँ का एक्सपेंस किया. तो आपको उसको अगर लॉग बनाओगे कि सुबह मैंने यहाँ यूज किया, दोपहर मैंने यहाँ पेमेंट करी, शाम को मैंने यहाँ पेमेंट करी, तो वो लॉग होता है. ठीक है. यस ओके सर. एक डॉक्यूमेंटेड मैनेज एक मैनेज डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम अपने एक प्रोसेस को राइट डाउन करते हैं. तो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, अभी अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम लॉग्स देखेंगे. तो वहाँ पे हम लॉग्स का बहुत अच्छा पर्पस होता है और logs are really important in any project. ओके सर. Okay, चलो ठीक है. So that's the one thing. Redirection मतलब उसका फ्लो कहीं और लेके जाना. अभी तो फिलहाल अपने पास एक ही मेथड है और वहां पे हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं. मे बी कैच ब्लॉक पे मैं कुछ ऐसा करूँ कि कोड का फ्लो चेंज कर दूं कि अगर एक्सेप्शन है तो ये हो, अगर ना आए तो ट्राई ब्लॉक चल ही रहा है और काम होता रहेगा. तो उस केस में हम करते हैं. तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है. दैट इज अगेन टोटली डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट्स कि प्रोजेक्ट में अगर एक्सेप्शन आती है, इस पर्टिकुलर फ्लो में आता है, तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है. तो वो एक प्रोसेस. तो मोस्टली हम सेकंड पॉइंट को रेफर करते हैं. फर्स्ट ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो हुआ. एक्सेप्शन हमेशा ट्राई ब्लॉक से ही थ्रो होगा. दैट्स फर्स्ट रूल. बट there's a other ways as well that you can re-throw the exception, rethrowing the exception. वो भी हम देखेंगे. बट फॉर नाउ कैच ब्लॉक इज यूज्ड टू हैंडल और लॉक द एक्सेप्शन. सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइम सेव करता हूँ. मैंने क्लास को कॉपी कर लिया है. आप लोग मत करना प्लीज, खुद से कोड लिखना. सेम एग्जांपल, statement 1 2 then 3 4 5 and we have a try block. Catch block is empty, so I want to log the exception. The very best good way for handling or logging stuff is, I'll show you here. यहाँ पे दिख जाएगा this one. ये मेथड यूज किया कभी, e dot print stack trace देखा तो होगा. Anyone? यस Manan? सर. Okay, Manan, have you used this? No, sir. No. Okay. Okay, now let's see what happens. So now again we have a scenario, and this will actually, you know, right now our console is quite simple. We have just 5 statements. If once we have executed this code, try block and catch block was empty. Now I want to log the exception.
whatever the information is there, I just want to log here on the console. So now console will be more messy. It will have lots of other stuffs. Maybe you guys won't understand what actually it's saying, but yeah, it will give you lots of log. So right click, run as application, exception. and there it is. एक बार run करते हैं, थोड़ा सा इसे एक reason होता है, I'll explain later. Okay, this is better. So what we have first statement, second statement, then we have this error and this. Now, as I said, it might be more complex और समझ नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा इतने, अच्छा पहले बताओ, this much is clear, what just happened here? First statement print हुआ, second statement print हुआ, then after it goes in a code, it says okay, we have exception. तो control get try block से direct catch block में, and then what we said, print stack trace. So जो भी stack था इसके पास, जो log था वो उसे print कर दिया console पे, JVM ने. Then after कैच का काम खत्म, इसने एक्सेप्शन रिसीव के ट्राई से एंड अपना काम कर दिया. अभी हम इसका जो एक रूल है जो इसका काम है लॉक करना, वो लॉक कर लिया हमने कंसोल पर. देन थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दैट्स हाउ इट एक्चुअली वर्क्स. You can say this is one of the simplified example but showing you the working of catch block. Okay, done. So that's how it works, and let me highlight the stuffs. When you say print stack trace, you don't need system.out.println. It has a inbuilt code which prints stuffs on your console. So just write e.print stack trace. Don't just say system.out.println and within or inside it you will write this statement. Don't do that. There we go. Okay. सर Yes. हम कैच के अंदर और भी ट्राई कैच ब्लॉक लिख सकते हैं. बिल्कुल. That's और possible. ट्राई के अंदर ट्राई के अंदर लिख सकते हो. नेस्टेड लिख सकते हैं हम लोग. ओके, लिख सकते हैं. पॉसिबल. ओके, सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल फॉर कैच ब्लॉक. कैच ब्लॉक का काम क्या है? लॉक करना, या फिर अगर रिक्वायरमेंट है तो कोड का फ्लो भी चेंज कर सकते हैं कि कैच के बाद ये रेस्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट ना हो, कुछ और हो. तो डिपेंड करता है, पर मोस्टली यू विल सी लॉग्स, LOGS, लॉग्स, दिस वन लॉग्स. ओके, नोट, कैच ब्लॉक शुड बी यूज्ड विद ट्राई ब्लॉक. अगर आप कैच के साथ ट्राई यहाँ से हटा दोगे, सी compile gets confused. It says syntax error on token catch, expected something. So catch cannot write just standalone, it needs some support from try block. So that's the very simplest and powerful usage of catch block. If take the condition from, I mean, it will only execute when you have an error. Okay, let's see the same stuff, but this time I'll say catch block example 2. And my example लिख देता हूँ with exception. Fine. So first one was with exception. Now there we go, and let me rewrite it with without exception. Okay, done. So we have this code catch block example without exception. So now I won't throw any exception. I'll say 5 plus 2. Done. Okay, so no exception. Now what will happen if I execute this code? Pipin, this one. सर ओनली स्टेटमेंट आर प्रिंटेड. फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बस. Okay, fine. So let's run the code, and yep, same again. Same thing happened. That means we don't have any exception. So catch block was never executed, right? So exception was not there. So that's fine. It's good for catch block. It will never execute because we don't have any exception try block. It's straightforward. It's just 5 plus 2, 7, no exception. So this block will never execute itself. So when you have exception in try block, catch block will always execute itself. Okay. I'll do one more thing in the same example. तो इस तरह आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है सिस्टम पर कि मैंने तो आपको बता दिया लॉजिक, कुछ अपने हिसाब से देख करो और कितना कितना चेंज आता है. एक और ट्राई करता हूँ, फिर बाकी आप लोग खुद से करिए.
same without exception, but this time I will remove, not actually remove, I'll say um थोड़ा सा typical tough करते हैं. Before operation statement, ups and yes block statement. Now it will go back to, it's actually with exception. Okay, and there we are with exception. Okay, Manan, please unmute and tell me what will be the output. Let's clear this out. So, yes. Sir, I think first statement, second Hmm. statement, then before operation statement, Right. then catch block statement, Right. then after operation statement, then third, fourth, fifth. Okay. So you're saying line 11 will also get printed Yes, sir. after this or before this? Sir, after catch statement. After this. And then after printing, after operation, it will print third, fourth, fifth. Correct? Yes, sir. Okay. Fine. Bipin, what do you think? Sir, Same or different? yes, sir, same. Bipin, Yes, unmute yes. karo. Sir, Hmm. same print. Same. So ये Yes, sir. line 11, when it will get printed, after catch block or before catch block? Same question. Sir, after catch block. आफ्टर कैच ब्लॉक. चलो ठीक है. ओके, सो आउटपुट बहुत अच्छा आएगा. यू गाइस विल लाइक इट. ओके, वेयर इज आफ्टर ब्लॉक और आफ्टर स्टेटमेंट? टेल मी वन थिंग, why line 11 get printed? Why this after operation statement get printed? Why? I have clearly said that once you have an exception, it goes directly inside the catch block. That means bottom statements after that exception line, they will never get execute. Doesn't matter what you will write there. So exception occurred on line 10. So right after that line 10, exception, I mean the control transfer from line 10 to line 13. Refer the lines. Line 10 got the exception, JVM detects it and it throws, or not actually throws, it transfers the program control flow from line 10 to 13. So it doesn't matter what you have after line 10 inside the try block. Rest of the तो line inside try block will never execute. सर, Yes. अगर हम इसे भी चाहते हैं एग्जीक्यूट करना है 11 नंबर को, तो हमें हम्म. एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ेगा ट्राई के अंदर, आई थिंक. नहीं होगा, क्यों होगा भाई? ट्राई के बाद तो कैच पे जाएगा ना. नहीं ट्राई के सर, बाद मैं दूसरे कह ट्राई रहा पे हूँ क्यों कि जाएगा? अगर हाँ. मुझे आफ्टर ओपी स्टेटमेंट प्रिंट करना है, हम्म. तो ट्राई के अंदर अगर हम इसे हैंडल नहीं करेंगे तो प्रिंट कैसे होगा? होगा ही नहीं. अभी तो नहीं होगा, मतलब करंट सिनेरियो में नहीं होगा. करंट सिनेरियो में तो होने वाला है नहीं. क्या चेंज यस करोगे सर, इसमें? मैं कह रहा हूँ कि एक ट्राई के अंदर एक और ट्राई ब्लॉक लगाकर और उसके अंदर एक, अच्छा. और इसके अंदर ठीक है. सर, इसे अब ठीक. इसे रख देंगे ए इंट सी इक्वल टू 5/10. इसको क्यों रखना है? मुझे तो बस लाइन प्रिंट करनी थी ना, आफ्टर ऑपरेशन वाली. यस सर, अगर हम इसे रखेंगे तो ये वाली बाद में प्रिंट हो जाएगी, उसे हैंडल करके सीधे कैच छोड़ के सीधे आ ऐसे जाएगा. अब ठीक है. और इसे सर बाहर कर दो आफ्टर वाले को, आफ्टर ओपी स्टेटमेंट, इस कैच ब्लॉक से बाहर. अच्छा, यहाँ. यस सर, अब प्रिंट देन हो प्रिंट. जाएगा. यस सर, मैं ये करा. ठीक है. चलो ठीक है. बिपिन, सॉरी नॉट बिपिन, मनन, एनी डाउट व्हाट जस्ट हैपेंड हियर और क्लियर है? Clear, sir. No doubt. चलो ठीक है. ग्रेट. ठीक है. पर नेस्टेड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अजीब रहता है विद इन द ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक में काफी रेयर है ये ट्राई को अंदर ट्राई लिखना, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, क्योंकि आइडियली एज अ डेवलपर वी शुड हैंडल ऑल एक्सेप्शन विद इन द सेम ट्राई ब्लॉक. तो एक्सेप्शन अगर ट्राई से थ्रो हो रहा है तो डेफिनेटली कैच में जाएगा राइट अवे फ्रॉम द सेम लाइन. कंट्रोल ट्रांसफर होगा कैच ब्लॉक पर, एंड देन कैच ब्लॉक शुड बी
more smart. Right now, we have this something like this, but now there can be a scenario where we might get more than one exception in try block. सो कैच ब्लॉक को थोड़ा सा स्मार्टली लिखना पड़ेगा. उस केस में अगर ऐसा करते हो तो ये एक्स्ट्रा ट्रायल ब्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट ट्राई ब्लॉक में. कैच में जरूरत पड़ सकती है क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन थ्रो होते हैं, तो एक्सेप्शन से एक्सेप्शन थ्रो हो जाते हैं कई बार. वो भी हम देखेंगे जब थोड़ा सा जीडी बेस्ड कनेक्शन देखेंगे. फॉर नाउ दिस इज वन मोर वे, एंड इफ यू गाइस नोज अंडरस्टूड अबाउट इट, सो दैट्स गुड फॉर मी. पर हाँ, आप इस कोड को रन करेंगे तो आफ्टर भी प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन तो इसके अंदर हैंडल हो गया. आया, ठीक है, कैश ने अपना काम करा और अपना काम कर दिया इसने. मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, कंप्लीट करते हैं. नेस्टेड कैच ब्लॉक स्टेटमेंट, ये भी प्रिंट होगा राइट, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है ट्राई ब्लॉक से. ये रहा, इसको भी पेंट पे रखते हैं. और अपना ट्राई कैच ब्लॉक का जो बेसिक्स था, दैट हैज बीन कवर्ड, एंड आई बिलीव यू गाइस आर नॉट कंफ्यूज्ड. सब समझ में आ रहा होगा. तो दो सिंपल कीवर्ड्स थे, हमने कवर कर लिया, एंड वी हैव आल्सो एडेड सम मोर काउंटिंग इन आवर जावा कीवर्ड्स. ठीक है, ट्राई कैच डन. फाइनली भी देखते हैं क्या करता है फाइनली. थर्ड कीवर्ड इज फाइनली, and finally is also used as a block. So finally block. So Manan, finally block क्या करता है? Any idea? So it will execute the statement written under it, no matter whether the try block throws an exception or not. Absolutely correct. Right. So doesn't matter you have exception or not, finally block always executes. So it will always execute irrespective of exception occurrence. Fine. So doesn't matter you have exception or not, this block will always execute itself. कैसे लिखते हैं? That we have already seen, and again we have a note. इसको हम अकेले नहीं लिख सकते. अकेले in the sense we cannot just write blindly. It needs try block. Syntax or examples, we have done that already here. Okay, that's how it looks. We have a try block, then finally block. So let's quickly write some example for finally as well. Right click, new class, finally block example. Done. Main method done. Okay. Okay, we have exception. So let's wrap this code with try. So see guys, if you write try and control space, so Eclipse suggests two options: try catch block or try finally block. And you can see I'm just using this keyboard up down button. So try catch, down, try finally. So I'll pick this one, and it will give you a ready-made, you can say silk skeleton or a syntax wise. Okay, done. And it will just say finally block. ओके, सो इसको और लिख देते हैं रिपीट करके, फाइनली ब्लॉक एग्जांपल विद एक्सेप्शन. ओके, सो फाइनली ब्लॉक विद एक्सेप्शन, here we are. और let's run the code. So we already know final block always execute, doesn't matter you have exceptions or not. So run as application. So first इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, प्रॉपर दिखेगा, और ना मैं खुद मैनुअली लिखूंगा इसको फिर. तो मैं खुद मैनुअली इसको फिक्स कर देता हूँ. तो
what happened here? We have statement 1, 2. Then after exception occurred on line 9, control goes from try to finally. We don't have a catch block, so it goes finally execute itself, and then execution stops. Usually यार print करता है, I don't know, सही से print नहीं कर रही है, नहीं करेगा, कोई बात नहीं. So this is the code, and there's a drawback of this. If you're just using try finally, so you guys can see our code will not execute it properly, and even we are not actually handle the exception. Exception doesn't handle, I mean, it's not handled here. So copy. So output is like this. Finally block executed. And this should be the idea. So first statement, second statement, then we have exception. So exception gets printed, and then finally block gets printed. But rest of the lines, third, fourth, fifth statement, they will never execute because exception was never handled. So finally block is not part of, or you can say, elegant way of handling exception. It doesn't handle the exception. The only purpose of having final block is to execute some code, irrespective of your code has some exception at runtime. Okay, so we can do one more thing. Instead of just using try or finally, we can say try catch finally. So try catch finally block example with exception. Fine. So try catch finally block exception example with exception. So now the syntax for this is like this way. I hope you guys are aware about it. Exception e catch block. Now this is the way, this is a perfect way of handling exception. So try block contains suspicious code. If that happens, so it goes in catch block, exception is handled, and finally block execute itself, and then rest of the code will also execute itself. So let's run the code. Here we are. So first statement, second, catch block execute, that means there was some exception, then finally block, and then third, fourth, fifth exception statements. What's the actual purpose of final block? Anyone knows about it? Actual uses of final block. What we will achieve to execute something. Exception आया नहीं आया doesn't matter. But what we will achieve? Any idea, guys? No? कोई बात नहीं. So the actual purpose of having final block is to close some resources which were left open during exception handling. Maybe inside try block, we were trying to connect with database, or we are trying to read some file from our file system. In between, some exception occurred. So what happened? The connection which were opened earlier before that exception, they always remain open unless that object gets completely life cycle and destroyed by the this garbage collector. So finally block do what? It closes those open connection. So that doesn't matter whether you have exception or not, it will always execute that code. So that's the usage of finally block, to close some open connection which were left behind when exception occurred. I'll write here. Mostly used for closing opened connection which were left while or during occurrence. Okay, done. So this was about finally block. Any questions so far? Try, catch, finally. We just covered 3 keywords. No question? No, sir. Okay. Anyone knows about the exception hierarchy? Exception class hierarchy? How it works, how it looks like? What is hierarchy? I mean,
सर यस। सर अभी आपने डिस्कस किया कि कोई ओपन कनेक्शन होता है उसको क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है फाइनली ब्लॉक। ठीक है, राइट। यस। तो सर अभी मतलब किस किस केस में हमारा जो ट्राई ब्लॉक है वो ओपन रह जाएगा? अच्छा चलो मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। सो इसको फिर से थोड़ा सा ब्लॉक को बड़ा करते हैं। तो मोस्टली दो केसेस हैं, पर मतलब जो रेगुलर प्रोग्रामिंग होता है उसमें दो केसेस हैं, अदरवाइज देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। एग्जांपल्स लाइक database connection, okay, that's mostly happen real time database connection you're trying to do, or reading or writing or operations on files, directories, fine. So if you're trying to read some file or folder, so exception can open there, can occur there. So closing connections for reading or option on this connection, okay. And one more is, which is quite rare to see. You guys will, that's it's not your task, but sometimes network connections. Maybe you are transferring some file, network, closing network connections. ठीक है, जावा में एक पैकेज है, सॉकेट लेयर की प्रोग्रामिंग है, और उन ऑपरेशंस में अगर कोई कनेक्शन ओपन रह गया तो वो भी काफी ज्यादा अफेक्ट करेगा पूरे जेवीएम को। तो उसको हम फाइनल ब्लॉक में लिख दो, और अगर कुछ एक्सेप्शन अगर हुआ या नहीं हुआ डजेंट मैटर, अगर एक्सेप्शन अगर होता है तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी ठीक है, कनेक्शन तो आपको क्लोज करना ही है। अगर कनेक्शन क्लोज नहीं करेंगे तो मेमोरी लीकेज इशू आ जाता है, तो वो दैट विल सेव अस। तो ये बहुत बार हुआ है, कई बार जो जूनियर गाइज होते हैं जो स्टार्ट कर रहे होते हैं किसी नए प्रोजेक्ट पर, दे मेस्ड अप लॉट्स ऑफ थिंग। आई हैव सीन इन माय प्रोजेक्ट एज वेल। काफी टाइम हो गया, 6 7 साल हो गए इस बात को। तो कॉलेज का ही पासवर्ड था, वो प्रोजेक्ट में हायर हुआ और उनको एक काम दिया गया, उन्होंने क्या करा, कोड लिख दिया, पर फाइनल ब्लॉक जो होता है वो उसमें कनेक्शन क्लोज करना भूल गए। तो वो कोड 2 दिन चला, क्योंकि वीकेंड का टाइम था, 2 दिन में उसमें कम से कम 1,500 2,000 ऑब्जेक्ट्स बन गए जो कभी क्लोज ही नहीं हुए। और फिर अल्टीमेटली संडे की नाइट सर्विस डाउन हो गई। फिर मंडे को पता चला। तो ये सब चीजें, तो ऐसा होता है कई बार, मेमोरी लीकेज इशू आता है, क्योंकि कनेक्शन बन रहे हैं, यूजर तो यूज कर रहे हैं, वो डजेंट मैटर कि वीकेंड है क्या है। अगर रियल प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है सर्वर पे कहीं, तो एक्सेप्शन तो आएगी, और कहीं कोड ब्रेक हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट तो बनने रह जाएंगे, वो कनेक्शन कभी क्लोज ही नहीं हुए। कनेक्शंस एंड ऑब्जेक्ट दे आर डिफरेंट, कनेक्ट मत कर देना दोनों को, बोथ आर डिफरेंट। ऑब्जेक्ट तो जावा में होते हैं, और कनेक्शंस एक अलग एरिया बनता है जहां ऑब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। तो ऑब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट ने कनेक्शन एक्वायर करा, और फिर वो कनेक्शन, ऑब्जेक्ट में एक्सेप्शन आ गई, तो कनेक्शन तो बन रह गया। तो मेमोरी किसकी जा रही है, उस सर्वर की जहाँ पे ये कोड डिप्लॉय है, और थोड़ी देर बाद ही वो भी डिप्लॉय खत्म हो जाएगा। ठीक है मानन, क्लियर? यस सर। ओके। सो एक इमेज शो करनी है आप लोगों को एक्सेप्शन हायरार्की के बारे में, क्योंकि वो एक इंटरेस्टिंग थिंग है, वो दिखाया था आप लोगों को मैं। एक्सेप्शन, देख रहा हूँ कौन सी इमेज पिक करूँ इसमें से। सर इसके ऊपर ये सारे वाली आई जितने थिंक। बॉक्स दिख रहे हैं सारे क्लासेस हैं एक्चुअली, और आप लोगों के लिए होमवर्क इसको देखा जाए क्या है इसमें। इसको ले लेते हैं, ठीक सा लग रहा है। ऑब्जेक्ट को थ्रू कर फिर एक्सेप्शन और एरर, अक्सर टाइम आयो और इंटरफेस। रीडेबल है ना, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, एक एक डायग्राम है काफी बड़ा सा, और दिस इज नोन एज एक्सेप्शन हायरार्की। टेबल एक्सेप्शन। ये भी ले लेना से।